So we have to see the question answers now. Let's start. The same word can be used as अब ये जो same word है like remark उसे हमने noun की तरह भी use किया है और verb की तरह भी. तो अब हमें change, show, throw, return, benefit इन्हें noun की तरह use करना है और verb की तरह. तो first change इसे सबसे पहले हम करेंगे noun की तरह. The change in his attitude was obvious. Then verb, you need to change your habit if you want results. Next, show. इसको सबसे पहले noun में हम कैसे लिखेंगे? The show started late because of technical issues. Verb, show me the proof before you expect me to believe you. Next, throw. Noun, his throw was weak. His throw was weak. It barely reached target. Verb, don't throw excuses at me, fix the issue. Next, return. Noun, the benefit of listening is that you avoid stupid mistakes. Then verb, you will benefit. ओके मैंने benefit का लिखा है क्या? ओके यहाँ पे benefit कर दो, रिटर्न वाला हम नेक्स्ट लिखेंगे. You will benefit from thinking before you talk. नेक्स्ट रिटर्न हम यहाँ लिखते हैं. Noun, his sudden return surprised everyone. Verb, return the book on time और pay fine. स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Complete the following. Our ears are like the funnel because they are always open and constantly receive sound without any control. The two rows of teeth are like a fence because they act as a barrier that a spoken word must physically pass through before coming out. The two lips are like a fence because they form the
final gate that controls the release of words. Harsh words are like scattered bits of paper carried away by the wind because once spoken, once they can't be taken back or collected back or collected back. Write a brief summary of a story. अब brief summary लिखना है हमें story पर. So I went quickly to my spiritual teacher for advice because I had spoken harsh, careless words to my friend and damaged our relationship. My teacher asked me to write down every word, every hurtful thing I had said. Then he told me to tear the paper, them into tiny pieces and throw them out of window. The wind scattered them everywhere. When he ordered me to collect the pieces, I couldn't find even one. He explained that spoken words are exactly like those bits of paper. Once they leave my mouth, I can't take it back. I can't take them back. That lesson taught me to think before I speak. Especially in anger. स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लैंग्वेज स्टडी. एन एडवर्बियल देखते हैं कि क्या होता है. एन एडवर्बियल इज समथिंग दैट इज यूज एज एडवर्ब. एडवर्बियल वो होता है जिसे हम एडवर्ब की तरह यूज करते हैं. एडवर्बियल ऑफन एक वर्ड हो सकता है, एक एडवर्ड हो सकता है. एग्जाम्पल, यू हैव रन फास्ट. आपने भागा है बट आपने फास्ट भागा है. बट इट कैन ऑल्सो बी फ्रेज और अ क्लॉज. अब वर्ड भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, बट फ्रेज और क्लॉज भी हो सकता है. जैसे वी प्लेड, हमने खेला. कहाँ पर? ऑन द प्लेग्राउंड. आई विल गो होम व्हेन द बेल रिंग. मैं घर जाऊँगा, बेल कब बजेगी. ये भी एक एडवर्बियल है. इन सेंटेंस 2, फ्रेज ऑन द प्लेग्राउंड, इसे हमने एडवर्ब की तरह यूज़ किया है. सेंटेंस 3 में, विल बेल रिंग, इसे हमने एडवर्ब की तरह यूज़ किया है.
अगर हम इसका एक आधी एग्जाम्पल देखें तो ही एट फास्ट या क्विकली हो सकता है, या ही ईट स्लो हो सकता है। देन अगर एडवर्बियल फ्रेज देखें तो शी वेटेड एट द बस स्टॉप, यहाँ पर एट द बस स्टॉप ये एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है। और अगर हम क्लॉज देखें तो आई विल स्लीप व्हेन आई फिनिश माय वर्क, व्हेन आई फिनिश माय वर्क ये एडवर्बियल क्लॉज हो सकता है। सो दिस इज आवर लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन देखेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो। और यहाँ पे हमारा जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से यूनिट 4 स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपने यूनिट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।